Let us see the next question. In March, a derivative dealer offers you the following quotes for June British pound option contracts. It is expressed in US dollar per Great Britain pound. So dollar price is given to us per pound. We have been provided with the contract, call put, call put, call put. Strike price or exercise price is given to us for $1.40 per pound, for $1.44 per pound, $1.48 per pound. Two premiums have been given to us. Assuming each of these contracts specifies for a delivery of 31,250 Great Britain pound, means the lot size is 31,250 and expires exactly in 3 months. So we have been provided with the time period information. It is 3 months. Complete a table similar to the following expressed in dollar currency. For a portfolio consisting of the following position. So what you have done, you have entered into these 4 transactions. You have purchased call option with exercise price 1.44. You have purchased put option with exercise price 1.40. You have sold call option with exercise price of 1.48. You have sold put option with exercise price of 1.44. So there are 4 transactions in which you will enter upon. So the different spot price is provided to us on the date on which the option expires. Dollar per pound exchange rate is provided to us for the month of June. That is the point at which the contracts expire. Net initial cost और मे बी नेट इनिशियल रेवेन्यू, क्योंकि हमने ऑप्शन बेचा भी है, हमने ऑप्शन खरीदा भी है, तो उसका नेट हमारा इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है. ये जो कॉल ऑप्शन हमने ट्रेड किया है, ये जो कॉल ऑप्शन हमने ट्रेड किया है, पुट ऑप्शन, उसका पे ऑफ लिखना है. यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे हमको लॉजिकली समझना है पे ऑफ. जो ऑप्शन हमने खरीदा है उसका पे ऑफ पॉजिटिव होगा, जो ऑप्शन हमने बेचा उसका पे ऑफ हमारा नेगेटिव होगा, और आखिरी में हमको प्रॉफिट या लॉस का गिनती करना है. एंड ऑफ कोर्स जब हम लोग आखिरी कॉलम फिलअप करेंगे तो ये सब कॉलम्स का हमको नेट करना है, दैट इज सब रो का हमको नेट करना है. ग्राफ, अच्छा इसका डायग्राम भी बनाना है. द टोटल नेट प्रॉफिट दैट इज द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लेस इनिशियल कॉस्ट. क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का मतलब है पे ऑफ, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड लॉजिकली. Ignoring time value of money consideration. Why? Because there is a timing difference. हमको पे ऑफ जब मिलता है या तो पे ऑफ हम लोग पे करते हैं और जिस दिन हमारा प्रीमियम का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा. रिलेशनशिप यूजिंग जून डॉलर पर पाउंड रेट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी एक्स एक्सिस पे आपको डॉलर पर पाउंड का स्पॉट एक्सचेंज रेट लेना है. क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है. Be sure to label the break even point or points. अच्छा, इन सब के अलावा आपको ब्रेक इवन पॉइंट का भी कैलकुलेशन करना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग स्पॉट एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रॉफिट लॉस का गिनती करो. उसके अलावा ये जो आपका स्ट्रैटेजी है जिसमें हमको रेडीमेड ट्रांजैक्शन दे रखा है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा वो भी कैलकुलेट करो. आई वॉन्ट यू टू डू एंटायर आंसर ऑन योर ओन. सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स पे इतना लिखिए दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इनिशियल प्रीमियम. ये जो लॉट साइज है उसको अभी फॉर द टाइमिंग इग्नोर करते हैं, एंड यू जस्ट टेल मी द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर एवरी 1 pound दैट वी माइट हैव रिसीव्ड, दैट वी माइट हैव पेड. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से आंसर कैसे किया जाएगा. क्वेश्चन में हमको ये सारे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है. तो बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रीमियम. क्या दे रखा है? लॉन्ग का मतलब है परचेस 1.44, यानी 1.44 एक्सरसाइज प्राइस, यानी हमको फोकस करना है 1.44 एक्सरसाइज प्राइस.
कौन सा है? लॉन्ग। लॉन्ग यानी क्या? परचेस। कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। तो अगर हम लोग कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे तो हमको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है वापस परचेस। 1.40, अच्छा मैं देखो 1.40 लॉन्ग यानी परचेस। कौन सा? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन हम लोग वापस बाय करेंगे, तो परचेसिंग ऑफ द पुट ऑप्शन with exercise price of $1.40 per pound will have this amount of the premium to be paid. अच्छा, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या है? सेल। सेल क्या होगा? दैट इज 1.48 कॉल। तो ये 1.48, उस पर कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन। हमने सेल किया तो हमको क्या मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग। हमको कब मिलेगा? जब मिलेगा तब। शॉर्ट 1.40 पुट, तो देखो 1.44, हाँ पुट, हाँ हमने सेल किया है तो हमको वापस मिलेगा। ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम मिलेगा। दैट इज 0.0422। ऐसा करके हमको सबसे पहले प्रीमियम रिकॉग्नाइज करना है। तो 1.44 एक्सरसाइज प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका प्रीमियम हमको पे करना है 0.0422। 1.40 पुट ऑप्शन हमने बाय किया, उसका प्रीमियम हमको पे करना है वापस 0.0260। बाय करेंगे उसका प्रीमियम पे करना है। 1.48 एक्सरसाइज प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल किया, उसका प्रीमियम हमको मिलेगा दैट इज 0.0255। 1.44 पुट ऑप्शन हमने वापस सेल किया, so in that case we are going to receive 0.0422. So we will be having so the kind of net profit or loss like this, like the initial जो प्रीमियम है 0.0255 minus 0.0260, so 0.0005। this is the premium। ऐसा हम लोग समझते हैं। मल्टीप्लाइंग विद द लॉट साइज विल गिव द आंसर ऑफ द टोटल प्रीमियम, बट टोटल के ऊपर अभी हम लोग दैट इज से उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट स्लैश रिसीप्ट। सबसे पहले हमने एक यूके पाउंड के लिए जो हम लोग ट्रांसैक्शन कर रहे हैं उसका नेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट है इस बार, तो वो कैलकुलेट किया। उसके बाद करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ऑप्शन ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स कॉलम नंबर 1 उसमें मैं लिख रहा हूं एस। एस का मतलब है स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर पर पाउंड। उसके बाद हम लोग 4 ट्रांसैक्शन कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड एट से वी आर कॉल ऑप्शन होल्डर, उस पर लिखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क और पे ऑफ। फिर मैं लिखूंगा कॉल ऑप्शन सेलर, अगेन उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क फिर पे ऑफ। वी आर अगेन पुट ऑप्शन होल्डर, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क पे ऑफ। आई एम पुट ऑप्शन सेलर, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क उसमें वापस पे ऑफ। फिर हम लोग एक प्रीमियम का कॉलम बनाएंगे एंड ये सारा पे ऑफ और प्रीमियम उन सब का नेट करके हमको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू से प्रिपेयर द टेबल। कॉलम नंबर 1 में जो स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको लेना है, so that we are required to take as what they have provided to us in the question. So here are the spot exchange rates which they have provided. So using them we are required to do answer. Along with that हमको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है।
Try to complete the table on your own. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रीमियम से. द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू पे इनिशियल इज 0.0005. सो 0.0005 इज अ प्रीमियम दैट यू हैव टू पे. तो वो मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूँ. 0.0005, 0.0005, 0.0005. फ्रेंड्स, से जरूरी नहीं कि आउटफ्लो ही होगा, इनफ्लो भी हो सकता है. ओके, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द purchasing of the call option with the exercise price of 1.44. That is the exercise price at which we have entered into the transaction to purchase call option. So we understand at say, when the spot price is equal to the exercise price, we are indifferent to exercise the same. If at all the spot price is, that is spot exchange rate over here, is less than, I forgot to mention this, 1.48 and 1.52. So when the spot exchange rate is less than, and that is say the exercise price, तो हम लोग हमारा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे. जब स्पॉट एक्सचेंज रेट ज्यादा है, हम लोग हमारा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे. सो हम लोग 1.44 में पाउंड खरीदेंगे, जिसको 1.48 में बेचेंगे. तो हमको क्या मिलेगा? 0.04 यूएस डॉलर का पे ऑफ मिलेगा. क्या होगा? 0.08 डॉलर का पे ऑफ मिलेगा. ओके, नाउ वी आर कॉल ऑप्शन सेलर एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1.48. तो जिसको हमने ऑप्शन बेचा है, ही इज इंडिफरेंट व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस 1.48. प्राइस उससे कम होगा, तो जिसको हमने ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा. अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा. अगर उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया और ही इज इंडिफरेंट, then in that case the amount of the payoff will be zero. If at all the spot exchange rate is exceeding the exercise price, then in that case you will get the positive payoff. कितना? 0.04. ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज वी आर लॉन्ग ऑन पुट 1.40. तो 1.40 and of course, so this is the negative payoff. Why? Because we have sold option. By mistake I have written the spot price of 1.40 for 2 times, so I'm ignoring this now, okay, for the purpose of calculation. Okay. We have purchase put option for exercise price 1.40. So we are indifferent at this point of time. अगर एक्सचेंज रेट उससे कम हुआ, we will exercise our right. So we will receive the payoff 0.04. अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट उससे ज्यादा है, then in that case we will not exercise our right. So the amount of the payoff will be 0. We have put option seller for exercise price 1.44. तो जिसको हमने ऑप्शन बेचा, ही इज इंडिफरेंट एट 1.44. प्राइस उससे कम होगा, ही विल एक्सरसाइज हिज राइट. So in that case we are required to make the payment of payoff 0.04 and 0.08. That is the amount of the payoff that we are required to pay. Otherwise, अगर spot exchange rate ज़्यादा है, then in that case he is not going to exercise his right.
Now we are required to make the computation of the overall profit or loss along with the break-even point. We understand that, say, in the first case, 0.04 minus 0.08. So 0.04 minus 0.08 minus 0.0005. That comes to 0.0405 into 31,250. That is, I'm multiplying with the lot size now. So it is 1265.625. 1265.625. That is the amount of the loss that we will have calculated in dollar currency. Okay. Next, हमको कुछ पे ऑफ मिलता तो है नहीं. We are required to make the payment of the payoff, that is 0.0405, because payoff का payment और premium का payment, multiplying with 31250. So 0.0405 into 31250. Again same amount ही आएगा 1265.625. That is the amount of the loss that we will have. Next, 1.44. In that case, the payment of the premium is the loss. क्योंकि कोई भी ऑप्शन का तो एक्सरसाइजेशन है नहीं. 0.0005 into 31250. So 15.625 का loss. Next, this is the payoff that we are going to receive, and this is the premium that we are going to pay. So 0.0395, that is the profit, into 31250, that is 1234.375. Again, this is the payoff that we are going to receive, this is the payoff that we are going to pay. तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.04 माइनस दिस अमाउंट ऑफ द प्रीमियम. तो नेट आएगा 0.0395 into 31250. So it is 1234.375. That is the way the profit or loss will be calculated for different situations. Now, proceeding for the break-even point, we can see that there is a loss, again there is a loss, again there is a loss, and there is a profit. There is a profit. So there is one break-even point जो कि ये दोनों स्पॉट प्राइस के बीच में है. हमको क्या करना है, अगेन लोअर प्राइस को बेस देना है और उसमें ये जो प्रॉफिट या लॉस है उसको हमको ऐड करना है. सो इट इज 1.4405. एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1.44. स्पॉट प्राइस इज एक्सीडिंग दैट, so we will have the payoff of 0.05. 1.48 is the exercise price. We understand that, say, 1.4405 does not exceed 1.48. तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. 1.40 is not greater than 1.4405. 1.44 is not exceeding 1.4405. तो ये सारे के सारे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होंगे. ये जितना अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव पे ऑफ है 0.0005 का पे ऑफ जो हमको मिला है उसी का अमाउंट ऑफ द प्रीमियम हमें पे किया है.
So overall the amount of the profit or loss will be zero. This is the way we are required to make the calculation of answer. So please take down answer. So this is the way we are required to show the answer. Now friends, over here we understand logically something like this. Everybody is requested to pay attention. हमने बेसिकली दो ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है. जैसे कि हमने क्या किया है, वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर बाय कॉल एंड सेल कॉल, बाय पुट एंड सेल पुट, ऐसे दो ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस में हमने एंटर किया है. तो उसकी वजह से क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट से in this strategy we will not be having say the huge profit or neither we will be having a huge loss. It is say similar to a kind of spread strategy that we have, very similar, not exactly the same. क्योंकि वर्टिकल स्प्रेड में तो क्या होता है, सिर्फ कॉल होता है या तो सिर्फ पुट होता है, पर यहाँ पे दो अपोजिट ट्रांजैक्शंस में हमने एंटर किया है. सो वी विल बी हैविंग से नॉट ह्यूज प्रॉफिट और नाइदर वी विल बी हैविंग अ ह्यूज लॉस, क्योंकि दो अपोजिट ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे एंटर किया है. वी अंडरस्टैंड लॉजिकली समथिंग लाइक दिस. एकदम अच्छी तरह से ध्यान दीजिए. इफ एट ऑल द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज लेस देन 1.40, आप 1.40 के नीचे कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट ले लीजिए. वी अंडरस्टैंड दैट से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन. यानी कॉल ऑप्शन तो मार्केट दैट इज से दिमाग से चला ही गया ना. स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.4 के नीचे है, तो जो पुट ऑप्शन हमने बाय किया है उसके लिए हमको पे ऑफ पे करना होगा, और जो पुट ऑप्शन हमने खरीदा है उसके लिए हमको पे ऑफ मिलेगा. जो हमने बेचा है ना फ्रेंड्स, उसके लिए हमको पे ऑफ पे कितना करना पड़ेगा, वी हैव टू पे मोर पे ऑफ बाय 0.04, that is 1.44 minus 1.40. यानी हमको 0.04 का पेमेंट करना पड़ेगा, और ऊपर से हमने इनिशियली 0.05 0.0005 का प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा पे किया है. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट ले लो विच इज लेस देन इक्वल टू $1.40 पर पाउंड, आपका लॉस क्या होगा, 0.0405. कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि जो ऑप्शन में बेचा है ना उसका हमको पे ऑफ ज्यादा पे करना पड़ेगा. सो यू कैन सी दैट से यू हैव टू पे मोर देन व्हाट यू रिसीव. आप इसके नीचे का भी कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट ले लो. दैट इज द रीजन से वी आर हैविंग से द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ 1265.625 for any spot exchange rate which is lower than 1.40. This is what we understand. जो हमने कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं और जो कॉल ऑप्शन में बेचे हैं, फॉर दैट से वी अंडरस्टैंड वंस अगेन कि वो कब एक्सरसाइज होंगे. इट विल बी एक्सरसाइज्ड 1.44 के ऊपर. नाउ यू थिंक अबाउट एनी स्पॉट एक्सचेंज रेट which is greater than equal to 1.48. ये 1.48 में कहां से लेके आया, यहां से लेके आया. वी अंडरस्टैंड दैट से जो कॉल ऑप्शन में बाय किया है उसमें हमने लोअर एक्सरसाइज प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बाय किया है. इसकी वजह से क्या होगा, जो पे ऑफ हमको मिलेगा ना वो हमको पे करने के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा, 0.04. और उसके सामने हमने प्रीमियम का खर्चा किया है 0.0005. तो क्या होगा, 0.04 माइनस 0.0005. यानी हमको फायदा क्या होगा, वी विल बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 0.0395. मल्टीप्लाइंग विद क्या किया जाएगा, लॉट साइज 31250. सो इट कम्स टू 1234.375. यानी अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.48 या उसके ऊपर कोई भी है,
हमेशा क्या होगा, वी विल बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1234.375। क्यों? क्योंकि जो हमको पे ऑफ मिलने वाला है ना, इन कंपैरिजन टू द पेमेंट ऑफ द पे ऑफ, वो ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन। So this is the way we are required to write answer in the second part of the question. And before that, say we are just supposed to draw the diagram. So we will be having on x-axis spot exchange rate. So please draw the diagram. On x-axis we will take spot exchange rate. Dollar per pound. And on y-axis we will be having the profit or loss. As what we have understood that, say कोई भी spot exchange rate होगा 1.40 के नीचे, then in that case we will be having a fixed amount of the loss. 1.40 या उसके नीचे we will be having fixed amount of the loss 1265.625. So we will be having loss of 1265.625. ये अमाउंट ऑफ द लॉस हमारा कब तक रहेगा? जब तक हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट एटलीस्ट 1.40 को क्रॉस नहीं कर देता है। जब हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.40 को क्रॉस करेगा, then in that case so we will start recovering the premium. So the diagram will go like this. There is a break even point 1.4405. We understand that say जब हमारा स्पॉट दैट इज जब स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.48 है, at that point of time we will be having maximum profit और उतना ही प्रॉफिट हमारा बाद में रहेगा। The amount of the profit is 0.04 minus 0.0005. So 0.0935 into 31250. That comes to 1234.375. This is the way the profit or loss will be calculated for different spot exchange rate. Chalo, with paragraph write down. Trader has entered into transactions in which call and put are combined. Full stop. Two opposite transactions of call and two opposite transactions
of put are entered upon. Full stop. Since opposite transactions are entered upon, comma, comma, the strategy will have limited profit, comma, limited loss potential. With paragraph write down, in case of call, option is purchased for comparatively lower exercise price. So, by exercising call, trader will be able to make profit if price increases. Full stop. In that case, definitely put options लैप्स, जो हमने खरीदा है वो और जो हमने बेचा है वो भी. Put option sold for an exercise price higher than purchased put option. So, when prices decline, amount of payoff to be paid is more, and with that there will be a loss. Overall, trader will gain if prices increase and vice versa. Full stop.